are you all? I hope you all are fine and doing well. So आज की वीडियो जो है वो बड़े मज़े की है और आज की वीडियो जो है वो है एक मेकअप ट्यूटोरियल। बस मैं सडनली उठी हूँ और मैंने रिकॉर्डिंग का सोच लिया बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम से रिकॉर्डिंग नहीं की थी एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं इस लुक को क्या नाम देने वाली हूँ बिकॉज ये लुक जो है वो बड़ा प्यारा सा ब्राउन्स की टोन पर होगा और थोड़ा सा आपका जो है वो डीप लुक होगा आउटसाइड, मतलब आपके आउटर एजेस पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I have applied this facial oil on my face and now I am going to use Beautify by Amna का ये porfade primer to minimize my pores. Next I'm gonna use this Milani का foundation which is a little dark for me. It is in the shade Dark Beige 42 Dark Beige. बट मुझे अक्सर जो है वो डार्क टोन के या वार्म टोन के मेकअप के साथ थोड़ा सा अपना डल बेस अच्छा लगता है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा पॉप होते हैं उसके ऊपर और बहुत अच्छे सुपर ब्लेंडेबल लगते हैं। सो या कॉन्टोर माई फेस फर्स्ट। ठीक है, उसके लिए मैं क्रीम कॉन्टोर यूज कर रही हूँ एले गर्ल का। So the way how you have to contour your nose, आपने इसको इस तरह से लेकर आना है। थोड़ा सा अप्लाई करना है यहाँ। आई एम यूजिंग मिस रोज का कंसीलर ओवर हियर। ओके, सो आई होप यू ऑल कैन सी। रेडी एंड अब बारी है हमारे आई लुक की। सो आई लुक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना जेम्स चार्ल्स का ये बहुत बड़ा वाला पैलेट और इसमें से जो है वो मैं बहुत मज़ेदार से कलर्स लेने वाली हूँ आज। और मैं सबसे पहले जो है वो इस वाले शेड को लूँगी और इसको अपनी क्रीज में जो है वो बिल्ड करूँगी। Build this shade on my outer V just to deep this look। ठीक है, इस शेड को थोड़ा सा डीपर करने के लिए मैं जो है उसको यहाँ यूज कर रही हूँ और आपने इसको सर्कुलर मोशन में करना है। ठीक है, आपने इसको जो है वो वी नहीं बनाना है,
सर्कुलर मोशन में जब इसको आराम से आपने करना है ब्लेंड, ओके, लाइक दिस। Alright, so next I'm gonna use some of the black shade on my outer V, तो थोड़ा सा जो है वो ये डीप हो जाएगा ये लुक, ठीक है। So again this shade I'm going to build very little. Now everything is perfectly bland. Next I'm going to take this shimmery shade, okay, और इसको जो है वो मैं अपने इनर कॉर्नर पर जो है वो थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। It will give a very nice gold look, you all can see. Alright, so now I'm taking this brush और जिससे मैंने थोड़ा सा ब्लैक शेड अप्लाई किया था। नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स इट और इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि ये गोल्ड शेड जो है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये ऑल कैन सी इट्स लुकिंग लाइक दिस नाउ, और मैं इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूंगी अब। सो नाउ इट इज परफेक्टली ब्लेंडेड। अब मैं जो है वो एक अपना थोड़ा सा फ्लैट ब्रश ले रही हूँ। इट्स नॉट कम्प्लीटली फ्लफी, इट्स नॉट कम्प्लीटली फ्लैट, आई थिंक आई मस्ट से इट्स लिटिल फ्लफी, यू ऑल कैन सी। सो अब मैं इससे जो है वो थोड़ा सा ये ऑरेंज शेड लेने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट अंडरनीथ माई आईज। Yes guys, so I'm back and this is the final look। आप देख सकते हैं कि इनसाइड जो है वो बहुत सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाईलाइटेड सा है और जो मेरे कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से डीप हैं। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट यही वाला शेड जो मैंने अंदर की साइड पर लिया है इसको मैं अपनी इस वाली फिंगर पर ले रही हूँ, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू पुट इट इन माई इनर कॉर्नर। Now it's time for the highlighter. So for highlighter I'm going to use this Color Express का ये वाला highlighter because it also has a very nice brown tone. So I'm going to use it to highlight my face. लिपस्टिक्स और इन लिपस्टिक्स का मैं डिटेल रिव्यू जो है अपनी इंस्टाग्राम की IGTV वीडियो में दे चुकी हूँ। रिव्यू से मैंने इनके सबके स्वॉचेस जो है वो उसमें दिखाए थे करके और अप्लाई करके, सो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो या इसमें से मैं यूज़ करने वाली हूँ अपना लिपस्टिक का जो है वो शेड नंबर 2 और जो इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। इट इज़ अ वेरी नाइस न्यू टोन, ठीक है। और इसके साथ जो है मैं थोड़ा सा इसका शेड नंबर 19 यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज इट हैज़ डार्क टोन एंड आई कांट लिव विदाउट डार्क कलर्स एज यू ऑल नो दिस।
नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, मैं फिर से यही वाला जो गोल्डन शेड मैंने अपनी आईज पर अप्लाई किया था, मैं बहुत थोड़ा सा लेने वाली हूँ और इसको अपने सेंटर में जो है वो लिप्स के थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। सो यस गाइज, ये था आज का लुक और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लुक अच्छा लगा होगा। सो अगर आपने एंजॉय किया है इस लुक को, इस मेकअप लुक को, और आपको अच्छी लगी है ये वीडियो, सो यस गिव दिस वीडियो a thumbs up, subscribe to my YouTube channel and yeah, follow me on Instagram for more amazing videos। और मेरी उन छोटी वाली लिपस्टिक के रिव्यू के लिए और यहाँ पे स्वॉचेस देखने के लिए मेरी IGTV वीडियो जरूर देखें। सो अपनी दुआ में रखिएगा मुझे याद और वेट कीजिएगा मेरी अगली वीडियो आने तक। सो लव यू गाइज, बाय।